Hello dear student, again welcome back to my channel. So आज हम प्लस टू सेकेंड ईयर इनविटेशन टू इंग्लिश वन फर्स्ट पोएम डैफोडिल्स विषय पढ़ा. डैफोडिल्स इज ए पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. या विलियम वर्ड्सवर्थ लिखी. फर्स्ट ऑफ ऑल डैफोडिल्स माने होची गोटे गोल्डन येलो कलर बेल शेप्ड फ्लावर जहाँकि अर्ली स्प्रिंग टाइम रे यह ह्रदर बा लेक्स साइड रे यह फुटी थाए. It usually blooms in early spring by the side of lakes. Then first introducing the poetry achi William Wordsworth is one of the major poets of his time. William Wordsworth तांको टाइम रे गोटे most important poet थिले. He was honored as England's poet laureate. से इंग्लैंड रा poet laureate भावे सम्मानित बा भूषित होइतिले. He defined poetry as spontaneous overflow of powerful feelings arising from emotion recollected in tranquility. से poetry को spontaneous overflow of powerful feelings रा गोटे spontaneous overflow भावे poetry को से define करथिले. He is a poet of nature and used common words to express his feelings. से nature poet बा प्रकृति कवि थिले एवं तांको फीलिंग्स को एक्सप्रेस करबा पई सब बेले कॉमन वर्ड्स बा साधारण वर्ड्स रा यूज करूथिले. देन फॉर्म ऑफ द पोएम incorporates the ideas and aspects essential to romantic poetry. पोएम रे रोमांटिक पोएट्री रो आइडियाज एवं एस्पेक्ट गुरिक रहिछि. The field of daffodils is evidently the subject of this poem, making nature the most apparent feature throughout. And एठारे field of daffodils बा daffodils हेउछि मुख्य वस्तु सब्जेक्ट मैटर. एठारे कवि नेचर को बेसी प्राधान्य दैछन्ति. थ्रू नेचर Wordsworth adds a range of natural images such as lakes, trees, stars and even clouds in this poem. Wordsworth एठारे बहुत गुड़िए नेचुरल इमेज प्राकृतिक इमेज यथा लेक्स माने ह्रद ट्रीज स्टार्स एवं क्लाउड्स विषय मध्य एही कवितारे वर्णना करिसंती. Through nature, a tranquil mood is instantly created from the very first line. I wander lonely as a cloud. एठारे फर्स्ट लाइन रू I wander lonely as a cloud रू ही नेचर रो गोटे ट्रैंक्विल वा प्रशांति सृष्टि होइछि. The atmosphere of the poem is very peaceful and the use of nature creates a joyful setting. एठारे पोएम रो एटमॉस्फेयर टी बहुत पीसफुल शांतिपूर्ण एवं यार नेचर माने नेचर गोटे जयफुल बा आनंदित अवस्थिति रे सृष्टि करिछि. Not until the poet later muses about what he saw does he fully appreciate the cheerful sight of the dancing daffodils. कवि जो dancing daffodils रो cheerful sight बा प्रफुल्ल दृश्य देखिथिले से तांको तांको परवर्ती जीवन रे मध्य से प्रशंसा करिसंती. Study the poem and note how Wordsworth glorifies the beauty of nature and the bliss of solitude. Wordsworth beauty of nature बा प्रकृति रो किपरि उच्च प्रशंसा करिसंती एवं लोनलीनेस टाइम रे से किपरि परफेक्ट हैप्पीनेस बा ब्लिस पाई पाइसंती से विषय रे देन कविता रे हम पढ़िबा. देन एठारे पोएम रो स्ट्रक्चर बहुत सिंपल फॉर्म रे एवं सिंपल लैंग्वेज रे रहिछि. 4 stanza of 6 line each makes the entire poem 24 lines long. एठारे पोएम रो 4टी स्टांजा रे 6टी लेखाएं धाड़ी रहिछि एवं एंटायर पोएम टी 24 लाइन विशिष्ट गोटे कविता रे परिणत होइछि. देन द टेक्स्ट रे फर्स्ट स्टांजा को जिबा. I wander lonely as a cloud that floats on high over vales and hills when
All at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. ଏଠାରେ ଆଇ ନିଜେ ବର୍ଡ଼ସୱାର୍ଥ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ୱାଣ୍ଡର ଲୋନଲି ଆଜ୍ ଏ କ୍ଲାଉଡ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଭାବେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେ ନିଜକୁ କ୍ଲାଉଡ୍ ବା ବାଦଲ ସହିତ ସେ କମ୍ପେୟାର କରିଛନ୍ତି। ବାଦଲ ଯେମିତି ପର୍ବତ ହିଲ୍ସ ଏବଂ ବେଲ୍ସ ଉପତ୍ୟକା ଉପରେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଭାବେ ଘୁରି ବୁଲେ ଠିକ୍ ସେହିପରି କବି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ହୋଇ ଏକାକୀ ବାଦଲ ପରି ବୁଲୁଥିଲେ। When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake, beneath the trees. ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଡାଫୋଡିଲ୍ସକୁ ହ୍ରଦ ପାଖରେ ଏବଂ ଗଛ ତଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଫ୍ଲଟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଇନ୍ ଦ ବ୍ରିଜ୍ ସେଇ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଫ୍ଲଟରିଂ ମାନେ ହେଉଛି ଦୋହଳୁଥିବା ମାନେ ହେଡ଼୍କୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିବା ହେଉଛି ଫ୍ଲଟରିଂ। ତ ସେଇ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ହ୍ରଦ କୂଳରେ ଦୋହଳି ଦୋହଳି ପବନରେ ନାଚୁଥିବାର ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବ୍ରିଜ୍ ମାନେ ହେଉଛି ମୃଦୁ ପବନ। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ ଯିବା। Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. Here is another simile. Like in the first stanza, the poet compares himself with the cloud, and here the flowers are compared to the star. First stanza रे जेमिति कवि निजको क्लाउड सह तुलना करछंती से सेकंड स्टांजा रे फ्लावर्स गुडी को स्टार मानक सह तुलना करछंती। Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretch in never-ending lines along the margin of a bay. माने मिल्की वे गैलेक्सी बा आकाशगंगा छापथरे जेमिति तारा गुड़िक कंटिन्यूअस लाइन रे अगणित भावे शाइनिंग बा चकचक एवं ट्विंकलिंग झलमल करती ठीक सेहीपरि डाफोडिल्स गुड़िक हृद कूल अगणित संख्यार शाइनिंग एवं ट्विंकलिंग करुथिले। Then Wordsworth here exaggerate the number of flowers by saying 10,000 saw I at a glance. That indicates he has never seen so many daffodils at once. Poet कहते से एकाथर के 10,000 saw I at a glance माने से एकाथर के 10,000 डाफोडिल से देखी मेबी से एते संख्यक फूल केबे देखी नथिबे सो से बेसी खुशी हो जाइछंती। The poet also says that the daffodils were tossing their heads as if they were dancing in happiness. कवि कहते सही डाफोडिल्स गुड़िक खुशी रे मुंड हलाई नाचुथिले। एक्चुअली पोएट डाफोडिल्स रो ब्यूटी को देखी बहुत आश्चर्य हो जाइछंती। Then third stanza को जीवा। The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. The waves in the bay were dancing and looking gleeful. माने waves गुड़िक ढेउ गुड़िक बेरे नाचुथिले एवं लुकिंग ग्लीफुल माने होची आनंदित से माने आनंदित देखाउथिले। नियर देम और बिसाइड देम द डाफोडिल्स वर डांसिंग तांका निकटरे डाफोडिल्स गुड़िक मध्य नाचुथिले। पोएट एठारे कहिसंती द डांस ऑफ द डाफोडिल्स वाज फार बेटर देन द वेव्स माने वेव्स गुड़िकर ढेउ गुड़िकर डांस ठू मध्य डाफोडिल्स गुड़िकर डांसटा बहुत फार बेटर थिला।
The poet was overjoyed and remaining in the merry company or jocund company of the flowers. Poet daffodils ର ଆନନ୍ଦମୟ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। So ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି I gazed and gazed ମାନେ so he was constantly gazing constantly at the flowers and enjoying the beauty माने से फ्लावर्स गुड़ी को constantly से देखुचंती एवं तांका ब्यूटी को से एंजॉय करचंती। But little thought what well the show to me had brought. The show of the flowers bring great well to the poet because the poet's imagination changes them again and again into something precious and permanently lovable. ଫୁଲଗୁଡ଼ିକର ଦୃଶ୍ୟ କବିଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପଦ ଆଣିଦେଇଛି କାରଣ କବିଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କ ଇମାଜିନେସନ୍ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବେଳକୁ ବେଳ କିଛି ମହାନ ପ୍ରିସିୟସ୍ ଓ ପରମ ଆନନ୍ଦକାରୀ ବସ୍ତୁରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେନ୍ ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ ଯିବା। For oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. By starting the stanza with for stanza को start करी कवि पुणी फुलगुड़िकर दृश्य तांक पई आनी देइथिबा आनंद रूपक संपद विषय वर्णना करिसंती। He clarifies why the sight of the flowers was so important in his life. से स्पष्ट करी कहिसंती काहेकि से फुलगुड़िकर दृश्य तांक जीवन रे बहुत गुरुत्वपूर्ण बहुत important. For oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye. Whenever he lies on his bed in a vacant or thoughtful mood, the daffodils flash upon his inner eyes or in his imagination. परवर्ती काल रे सी जेतेबेले दुखद मनने बेड्रे गड़ी पड़िछंती सेतेबेले सतेज डाफोडिल्स रो दृश्य तांको इनवर्ड आए बा इमेजिनेशन कल्प दृष्टि रे फ्लैश होइछि बा देखा दैछि। The daffodils have become an everlasting memory for the poet whenever he is lonely. माने कवि जेतेबेले एकाकी थांती से डाफोडिल्स गुड़िकर एवरलास्टिंग मेमोरी को से इनवर्ड आए रे देखी थांती। So he calls it a bliss of solitude, a blessing of staying alone. माने से यहाँ को गोटे ब्लिस ऑफ सोलिट्यूड बा परम आनंद बोली कहिसंती। ए ब्लेसिंग ऑफ स्टेइंग एलोन बा एकाकी रहिबार गोटे ब्लेसिंग बोली कहिसंती। एंड देन माय हार्ट विथ प्लेजर फील्स and dances with the daffodils. And whenever he sees the flowers in his imagination, his heart fills with pleasure and his mind dances with the daffodils. And poet जेतेबेले भी तांका इमेजिनेशन रे daffodils गुड़ी को देखंती तांका हार्ट खुशी रे भरी उठे एवं माइंड daffodils नाची उठे। तो यही पोएमटी पोएट का फीलिंग्स को एक्सप्रेस करिछि। पोएमटी बहुत सिंपल लैंग्वेज रे एवं सिंपल फॉर्म रे रहिछि दैट रियली draws one's attention, and that is why this poem has been one of the most read and mentioned subjective poem in the history of English literature. तो एथिला आपण मानकर daffodils आपण मानकर बुक रे ग्लोसरी रे डिफिकल्ट वर्ड रो मीनिंग माने रहिछि एवं क्वेश्चन आंसर को निजे निजे ट्राई करबा को चेष्टा करंतु। तो वीडियोटी आपण माननको जदि भल लागितबा तो प्लीज लाइक करंतु, शेयर करंतु, सब्सक्राइब करंतु एवं कमेंट मध्य करंतु एवं थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।